Welcome to the second lecture on work, power, and energy. In this lecture, we are going to solve a few CRQ based problems. Let's get started. It says a diver weighing 750 newtons. That is his weight, which is the product of mass and gravity, is 750 newton. Dives from a boat that is 10 meters above the surface of a pool. Let's just draw it here. We have the pool here, and then this is the surface that is 10 meters from the pool, right? So he dives from this point. And then they are saying that use the conservation of mechanical energy to find his speed at a point which is 5 meters above the water surface. If this is the water surface, then this must be 5 meters above the water surface. They are saying that the diver started from this point A and ended at this point B. You have to you have to apply the concept for conservation of energy इस region के लिए, right? When he dived from this point, we say कि इस point पर क्योंकि किसी certain height पर था ये, तो it had some potential energy, right? And we know that potential energy is mgh. mg we have this 750 and height we are to take 10 meters or 5 meters. We are going to apply the concept of conservation of energy, which says change in potential energy equals the change in kinetic energy. So point A से point B तक आने में whatever will be the difference of height, this is what we have to place here, right? This makes us conclude that we have to place this height. And if this is 10 and this height is 5, so obviously this would be 5 meters. We write 5 here. So we have change in potential energy. We just need to equate it to the change in kinetic energy. This product is going to give us 3750, of course, joules being the change in kinetic energy, potential energy. Now we'll keep this as the change in kinetic energy, and we know that kinetic energy is half mv square, and of course change in kinetic energy की बात करें तो we'll place change in velocity squared, and we know कि इस point A पर क्योंकि maximum potential energy थी and kinetic energy zero थी तो यकीनन velocity भी zero थी, तो यहाँ से यहाँ तक आने पर whatever is the difference in the velocity of this diver is exactly the final velocity at this point B. इसकी वजह से हम यहाँ से ये डेल्टा एक्सक्लूड कर सकते हैं, राइट? सो विल जस्ट रीअरेंज दिस इक्वेशन 3750, this 2 gets multiplied here, this mass, they did not provide us with mass directly, right? लेकिन क्योंकि इन्होंने weight दिया which is the product of mass and gravity, so अगर मैं weight को gravity से divide कर दूं तो मुझे mass पता चल जाएगा. 750 divided by 9.8 will give you 76.5. ये आ गया mass of this diver, and this is the expression for the square of velocity. You are to calculate the velocity, right? So we'll just take root of this equation, and this will give us the final velocity. Of course, this is the equation in the absence of friction. Like मैंने नॉन रेजिस्टिव मीडियम कंसिडर किया जैसा इन्होंने क्वेश्चन में कहा था, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर आपका मीडियम रेजिस्टिव है इन दी लेक्चर नंबर 1, तो फिर आपके पास वर्क डन अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाला एक फैक्टर भी आता है. खैर, place these values in your calculator, and if I'm not wrong then you'll get 9.9, and क्योंकि it is velocity so it is meters per second. Then they are saying if a ball of mass 85 grams, mass is 85 grams, is thrown vertically upward at a speed of 28 meters per second, that is initial speed is 28 meters per second, then the vertical height it would reach without any loss will be height. Calculate करनी हमने. We'll again use the same principle. अभी इन्होंने कहा without any loss, यानी non resistive medium अगर हम consider करें, so हम कहेंगे जो भी change in potential energy है वही आपके पास change in kinetic energy के बराबर आएगा. Potential energy is mgh, kinetic energy is half mv square. This m gets cancelled with this m. We have to calculate height, right? So we'll rewrite this equation v square as it is, and this g will move to the
denominator. 0.5 for half, square of velocity, that is 28 square over this gravity, which is 9.8. This together will give you 40, and क्योंकि it was height, that too जब आपने velocity को meters per second में रखा था, तो it has to be in meters, right? आपसे कह रहे हैं अगर आप 28 meters per second की speed पर throw करेंगे तो ये 40 meters का vertical distance travel करेगी अगर medium non resistive है, right? फिर second part में आपसे कह रहे हैं अब अगर आप ये consider करें कि medium non resistive नहीं था, right? कुछ ना कुछ resistance थी, तो अब बताएं कि फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ऑफ कोर्स आपने अब क्योंकि रेजिस्टिव मीडियम कंसिडर किया है तो इसका मतलब है अब सारी की सारी किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होगी, कुछ पार्ट जो है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के लिए भी यूटिलाइज हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स अगर पहले बॉल 40 मीटर्स की हाइट रीच कर रही थी तो अब 40 तक नहीं पहुंचेगी, उससे पहले पहले इसकी स्पीड 0 हो जाएगी एंड वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट कर देगी। We are to write the equation for conservation of energy in the presence of air resistance, right? जो अभी हमने lecture 1 में पढ़ा था, let's just write this equation here. Kinetic energy है जो convert हो रही है potential energy plus work done against friction, which is force into height, of course. Then we have kinetic energy, mass है 85 gram, we'll convert it into kilogram by dividing it with 1000. Then square of the velocity, that is 28 square. Then we have mass again, that is 0.085, gravity is 9.8, height अब 29 मीटर जा रही, as I mentioned कि अगर पहले 40 मीटर थी तो अब उससे कम रहनी चाहिए। 29 plus force of friction is what we need to calculate and height इन्होंने अब mention कर दी, it is 29 meters. This factor for kinetic energy is going to give you 33.32 minus this whole factor, which is 24.157, and this equals 29 times F. Let's just simplify this equation further. The difference is 9.163 over this 29. That is force of friction is 0.3159 or maybe 6 newtons. Then a man of mass 60 kg, mass is 60 kg, runs up a staircase of 30 steps in 120 seconds. Time is 120 seconds. If each step is 20 centimeters high, then calculate the power. Total कितना vertical distance travel किया होगा? It is 30 steps और हर step की height है 20 centimeters. That is 0.2 meters. So total vertical height कितनी हुई? 30 into 0.2, which is 6 meters. And you are to calculate power. What is power? Rate of expenditure of energy. Again, height mention किए, so energy in this case is potential energy. Mass is given 60 kg, gravity is understood 9.8, and height is 6 meters over the time, which is 120. That is 29.5 watt. And had they asked you to write the final answer in terms of horsepower, which is the unit of power, all you have to do is know that 1 horsepower equals 746 watt. So you'll just divide your final answer with 746 to get the final answer in horsepower. Then calculate the escape velocities of the Earth and the Moon if their masses are this and this respectively, and their radii are this and this. How do we calculate escape velocity? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से किसी सैटेलाइट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री करवाने के लिए आपको उसको किस स्पीड पर थ्रो करना पड़ेगा, राइट? We have two equations for escape velocity. It is gm over r and the other one is under root
2gr, where these two g's are different. It is gravitational constant, which is 6.67 exponent minus 11, and this is gravitational acceleration, which is 9.8. And this r in this case will be taken as the radius of the mentioned planet, and this m will be the mass of planet. All you have to do is just put in these values in their standard unit, and you will get to know the final answer. That is, for suppose for this case, we have 6.67 exponent minus 11. Mass of Earth is 6 exponent 24, and the radius of Earth is mentioned to be 6 exponent 6 meters. You'll know the escape velocity अर्थ के केस में, और अगर मून के लिए पूछते हैं तो दिस g will remain constant because it is a constant, right? Mass of moon place कर दें and the radius of moon as well. Another question for the conservation of energy, that too in the presence of a resistive medium. आपसे कह रहे हैं a 10 kg object, mass is 10 kg, was dropped from a tower of 100-meter height of the tower is 100 meters. Due to air friction, the object was found to be moving with a velocity of 40 meters per second just before hitting the ground. Velocity is 40 meters per second. Calculate the frictional force due to air acting on the object. So we'll write conservation of energy. हमने पढ़ा था अगर ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकल किसी हाइट से रिलीज करें, इस टाइम पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये कन्वर्ट होगी किनेटिक एनर्जी में और इन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, राइट? अगर ये अपवर्ड मोशन शो करते हैं तो हम एफ एच को यहाँ रखते पॉजिटिव में. सो इस केस के लिए दिस राइट हियर इज द एग्जैक्ट इक्वेशन व्हिच वी आर गोइंग टू यूज. वी हैव टू कैलकुलेट दिस एफ हियर. Did they provide us with the mass? Yes, they did. Height, they did. And velocity, of course. And we are to calculate this force. Just rewrite this equation. You will get mgh minus half mv square, and then this whole factor gets divided with this h. This will give us the equation for force of friction. We have 10 kg, gravity 9.8, height is 100 meters, minus 0.5 for this half, mass is 10 kg, and square of velocity 40 square is 1600, and then this height, which is 100 meters, in the denominator. Just put these values in your calculator and you will get to know the frictional force in newtons, which in this case is 18 newtons. Now they are saying that a box is released at P and slides without friction until it reaches this point Q. Derive and calculate its speed at Q. In the above track, section PQ is quadrant of a circle of 1 meter radius. That is, this distance is given to be 1 meter and this is also 1 meter. See, you have to derive an expression for speed. अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं the object started from a certain height, that is, it had some potential energy, which is mgh. And क्योंकि इस point पे इसकी speed 0 थी, but as it kept moving downward, following whatever the path it did follow, the potential energy of the object keeps on decreasing and the velocity keeps on increasing. That is, उसकी kinetic energy बढ़ रही थी, right? So we can write the equation of the conservation of energy. Potential energy is being converted into kinetic energy, and क्योंकि इन्होंने कहा है without friction, so we are not going to write plus work done against friction and all. Now you have to derive the expression for Q. This m in this case gets cancelled with this m. You have to derive the expression for velocity, right? So we'll just rewrite this equation. This 2 gets multiplied with gh, 2gh. It is v square, and this square gets cancelled with this root. This is the expression for the velocity at a certain point. यानी अगर आपको सिर्फ ये बता दें कि ऑब्जेक्ट इस हाइट से ड्रॉप किया गया था, बताएं जब वो ग्राउंड स्ट्राइक करने लगेगा उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है, तो आपको बस ये फार्मूला लगाना है. 2 is constant. Gravity in this particular case, of course, जब अर्थ को ही वो मेंशन कर रहे हैं, is also constant. तो बस वो आपको हाइट देंगे and you should be able to calculate velocity. क्या इन्होंने हाइट हमें प्रोवाइड की है? Potential energy is the energy associated with the height, right? So आप ये वाला distance place करेंगे, not the length of the path followed by the object. ना ही आप horizontal distance consider करेंगे. So in this case, gravity is 9.8, height is given to be
1 मीटर्स। सी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ हाइट है, it is 1 meter. Just place these values in your calculator and you'll get 4.42 meters per second. Then they are saying a 5 kg object, that is mass is 5 kg, is dropped from a height of 5 meters. Find the kinetic energy when it strikes the ground. Kinetic energy के लिए of course हमें चाहिए velocity, और अभी हम एक equation पढ़ के आए, right? 2gh will give us the velocity. We'll get velocity from this equation and kinetic energy फिर कैसे निकालेंगे? हाफ mv स्क्वायर से, mass is already given, velocity यहाँ से आ जाएगी। फिर हमें प्रूव करना है कि किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल आ रही है। किनेटिक तो यहाँ से आ गई, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? It is mgh. Mass is given, gravity will take to be 9.8 and height is already given. We'll just put in these values. Let's just see if we end up getting the same answer. This gives us 9.89 meter second, and putting this velocity in this equation for kinetic energy gives us 245 joules. How about the potential energy? Mass is 5, gravity is 9.8, height is also 5. See, this gives us 245 joules as well, right? So we ended up getting the same answer. Kinetic and potential energy बराबर थे. Just keep this thing in mind. This would not have been the case अगर उन्होंने कहा होता कि आप किसी resistive medium के बारे में ये case solve कर रहे हैं. फिर अगर आपको किसी इक्वेशन से प्रूव करना है कि पोटेंशियल एनर्जी से अगर आप स्टार्ट करें और इक्वेशन को रीराइट करना शुरू करें तो आपके पास फाइनली वही इक्वेशन आएगी जो किनेटिक एनर्जी के लिए आएगी. Let's just see how do we do this. Potential energy is mgh, right? And mg collectively is weight, and weight is nothing but the force of gravity, right? So we can write force and h as it is. Force ko we can rewrite as the product of mass and acceleration, and this height, yeah, distance as it is. Now here we are going to use Newton's equation. It says 2as, is case mein the distance is represented in form of height, so we will just write 2ah equals vf square minus vi square. We will rearrange this equation to get to know के product of acceleration and distance किसके बराबर आ रहा है, which clearly is vf square minus vi square over 2. We are going to place this value in this equation. We'll get potential energy equals mass as it is. इस product की जगह we'll place vf square minus vi square over 2. Now we can write it as half common ले लें. Now you have vf square minus vi square. आपसे कह रहे हैं ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया गया था और हमें पता है फ्री फॉल मोशन में इनिशियल पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट किसी वर्टिकल हाइट पर है उसकी स्पीड 0 होती है. We'll take initial velocity to be 0. अब सिर्फ एक ही वेलोसिटी बच गई है. We'll name it the final velocity or generally velocity, right? And ये वाला square as it is. See, don't you think this is the equation for kinetic energy? Half mv square. Proved. Now they are saying discuss the interconversion of energies when a girl drops a cup of tea from a certain height. Since the cup was at a certain height, it had some potential energy which is mgh, right? आप कहेंगे क्योंकि ये ड्रॉप हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी हाइट की वजह से एंड किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी. लेकिन क्योंकि इधर इन्होंने मेंशन नहीं किया दी मीडियम इज नॉन रेजिस्टिव, तो फिर आप कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कुछ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा. और फिर आप चाहें तो इसको मजीद एक्सपैंड कर सकते हैं अपने आंसर को ये कह कर के जब कप फाइनली ग्राउंड को हिट करेगा और वो टूट जाएगा या कोई साउंड प्रोड्यूस होगा तो कुछ पार्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी. और हो सकता है ग्राउंड का वो रीजन थोड़ा सा हीट अप हो जाए तो आप कहेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट हीट एनर्जी में भी, दैट इज थर्मल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ आपको क्या करना है वही जहां पर अभी हमने किनेटिक एनर्जी, राइट? स्टार्ट हमने किया था कहां से, mg, और फिर mg को हम डायरेक्टली लिखते हैं और साथ हाइट आ जाएगी. आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करेंगे. वर्क डन इज द
प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो आप वो डॉट की वजह से cos थीटा वाला फैक्टर हटा देंगे बिकॉज इट वुड इवेंचुअली गिव यू 1, राइट। तो आप इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में इन्होंने डिस्प्लेसमेंट को ना s से मेंशन किया है ना h से, they mentioned it with delta x, फिर आप डेल्टा एक्स प्लेस कर लें और फिर बाकी वही स्टेप्स फॉलो करें कि फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन और डेल्टा एक्स, फिर न्यूटन की इक्वेशन लिखें 2a डेल्टा x equals vf square minus vi square and so on till you reach kinetic energy. in this case में change in kinetic energy चाहिए तो आप फाइनली इसी पॉइंट पर जाएं vf square minus vi square वाले पे, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना। अब वर्टिकल कोई हाइट तो नहीं कवर की ऑब्जेक्ट ने जिसमें हम कहें कि यकीनन स्टार्ट में वेलोसिटी जीरो होगी, सो वी कैन नॉट इग्नोर दिस वी आई। तो आप इसी टर्म्स में अपना फाइनल आंसर दे देंगे। अब आपसे कह रहे हैं कि देयर इज अ डाइवर ऑफ मास m, ही ड्रॉप्स फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ हाइट h above the water surface as shown in the given diagram at h by 2, that is जब वो इस पॉइंट पर पहुंच गया, diver is halfway down. What you have to do is, using the law of conservation of energy, you have to show that the speed of diver at this point is under root of 2gh. Let's just see, under root of gh, my bad, right? So start में it had some potential energy, जैसे जैसे ये downward proceed कर रहा है potential energy change हो रही है kinetic energy में, so we say that change in potential energy equals change in kinetic energy. Potential energy h, so change in potential energy will be mg, difference in the height, h से h by 2 पर आ गया, यानी कितनी height travel की है, h by 2, right, because इनका difference निकालेंगे we'll get h by 2, and then kinetic energy which is half m delta v squared. This m gets cancelled with this m, you have to write down the expression for velocity because start में यकीनन इसकी velocity 0 थी, तो अब इस केस में हम कह सकते हैं कि change in velocity will exactly be equal to the velocity at this point, क्योंकि initial velocity तो 0 थी, whatever is the final velocity at this point will be the change in velocity. So you will say it becomes v square, this 2 gets cancelled with this 2, you say gh equals v square or under root gh equal v. This is what you were supposed to prove. यहाँ आपसे कह रहे हैं प्रूफ करें तीनों केसेस में वर्क डन की नेचर क्या है। सी, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो मैग्नीट्यूड मेंशन नहीं करते और फिर भी वर्क डन पे आपको कमेंट करने को कहते हैं, इसका मतलब है आपको एंगल पर अटेंशन जो है वो रखनी है, अपनी फोकस एंगल पर करना है, दैट इज कॉस थीटा के फाइनल आंसर को फोकस करना है। Parachutist opens his parachute and his velocity slows down due to air resistance. Work done by the air resistance. Parachutist यकीनन downward motion दे रहा होगा, right? यानी displacement is vertically downward. आपको निकालना है work done by the air resistance. तो फिर आप फोर्स कौन सी रखेंगे, फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए फोर्स की, वर्टिकली अपवर्ड, बिकॉज ये मोशन को अपोज करती है। नाउ दैट वी नो दैट इन दिस केस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो हम कहेंगे यकीनन cos of theta will be the angle between these two, should be 180, and cos of 180 is -1, तो आप कहेंगे इस केस में नेगेटिव वर्क हो रहा है, राइट। यानी फ्रिक्शनल फोर्स यकीनन चाहती कि ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करे, बट ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। A person carries a luggage in the forward direction, या गई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, while the weight of the luggage is in the downward direction. Of course, weight is vertically downward. Work done by the force of gravity. Force of gravity is vertically downward. Object move कर रहा है forward. What is the difference? What is the angle between force and displacement? It is 90 degree. Cos 90 is nothing but 0. So आप कहेंगे इस केस में 0 work is being done by the force of gravity. Because gravity की direction में move नहीं ना कर रहा object. A car moving in the forward direction suddenly skids on the wet floor in the same direction. यानी forward move कर रही थी and work done by the forward force. Forward force again forward direction में थी और car भी skid forward direction में किया, that is उसकी displacement भी यही है. Now force and displacement are parallel to each other. When we say parallel, that is 0 degree angle between them, and cos 0 is nothing but +1. So you'd say in this case work done by the forward force on the car is
पॉजिटिव। और अगर इसी केस में वो आपसे कहते हैं वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस, तो आप कहते हैं कार फॉरवर्ड जा रही है, बट एयर रेजिस्टेंस जो चाहती है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, बिकॉज वो हमेशा मोशन को अपोज करती है। फिर इस केस में आप कहते हैं दिस एंगल इज 180 डिग्री और वर्क डन यकीनन नेगेटिव होगा। जब भी वर्क डन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, मेक श्योर यू दी क्वेश्चन ओरली, ताकि आपको पता हो किस फोर्स की वजह से वर्क डन वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। बिकॉज इसी सेम केस में वर्क डन बाय द फॉरवर्ड फोर्स ऑफ कार इज पॉजिटिव, बट वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। सी इन दिस केस आपको कैलकुलेट करनी है पावर, आपको हाइट भी प्रोवाइड कर दी है, मास भी दे दिया है, टाइम भी दे दिया है, ग्रेविटी भी गिवन है, सिंपल mgh over v. Then why is it better to launch a spacecraft into its orbit from a location away from the equator? क्यों बेहतर है? आप अगर उसको लॉन्च करना चाहते हैं, आपको उसको कुछ ना कुछ escape velocity प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट? एंड escape velocity के लिए the equation we have is g m over r. Greater the r, smaller will be the escape velocity जो आपको उस spacecraft को प्रोवाइड करनी पड़ेगी to launch it. एंड आप फिर फार्मूला लगाकर फाइनली escape velocity find out कर सकते हैं यहाँ से. Just keep this thing in mind that this g is not the gravitational acceleration, this is gravitational constant. Then in this question they are saying suppose a car of mass 1200 kilograms is with a velocity of 27.5 meters per second. If the engine is applying a uniform force of 3500 Newton, then the power of the car at the end of 8 seconds, time is given to be 8 seconds. This is what you are to calculate. Now we know that power is rate of expenditure of energy, that is work done over time. Work done को you can also write as force into displacement, force आ गई, denominator का time, displacement को कैसे लिख सकते given, but हमें velocity और time पता है, and हमें पता है displacement is the product of force and velocity, right? Oh, velocity and time, right? See, this time gets cancelled with this time and you can directly multiply force and velocity to calculate power. आप power का एक दूसरा formula भी पढ़ते ना, it is F dot D and it is also F dot V. So force is 3500 Newton, velocity is 27.5. Ignore this mass formula में calculation में इसका कोई लेना देना नहीं है. It is just an additional information. Then a constant force F net acts on an airplane of mass m and it covers distance x with an increase in the velocity from Vf. Did you the work energy principle? Work energy principle, it says net work done is equals to the kinetic energy. This is the work energy principle. और दूसरे ही अल्फाज में जब ये क्वेश्चन इन्होंने प्रोवाइड किया था तो यही सेम काम अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन में किया है, राइट? विल स्टार्ट विद द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर आप फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन में ओपन कर दें, फिर न्यूटन की इक्वेशन को यूज करें एंड यू विल इवेंचुअली be able to prove this equation. Now they are saying label the given statements as true or false. The object started at point P and it ended at Q, I guess, following two different paths. Pehle ramp A and then ramp B. The vertical separation between this point Q and this point P is delta H. The amount of work done by friction will cause the total energy of the system to change. Yes, friction is not the useful energy, right? तो friction की वजह से जो भी energy dissipate होगी उसकी वजह से total energy of the system कम हो जाएगी. Selection of route from ramp A or ramp B will affect the work done by the car. Work done by the car will depend on the route in this case followed by the car because दोनों routes में length अलग अलग है. इसकी length थोड़ी ज़्यादा है और इसकी length थोड़ी कम है. इस केस में हम कहेंगे कि डिफरेंस आएगा, बी के केस में ज्यादा वर्क हो रहा है और ए के केस में कम वर्क हो रहा है. बट देन अगेन अगर ये हमें कहते हैं वर्क डन बाय दी ग्रेविटी, दोनों के लिए कंपेयर करें तो फिर हम वर्टिकल हाइट कंसिडर करते हैं जो दोनों के केस में सेम है एंड वी वुड हैव सेड कि इट डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस इफ द कार इज मूविंग
through this ramp A or ramp B. जिस फोर्स से आपसे वर्क डन पूछा जा रहा है, आप उस फोर्स और उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करेंगे. इफ द कार इज मूविंग थ्रू दिस पाथ, तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है, फॉरवर्ड फोर्स ऑफ द कार, अगेन दिस सेम. आप ये टोटल लेंथ कवर करेंगे. लेकिन अगर वो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी या अगेंस्ट द ग्रेविटी आपसे पूछते हैं, तो ग्रेविटी इज डायरेक्टेड अलोंग वर्टिकल, राइट. तो फिर आप ये वर्टिकल हाइट कंसिडर करेंगे, जो दोनों केसेस में सेम है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्योंकि दोनों का सेम है. So that is one. Two is ramp A would lose more energy than ramp B. रैम्प ए की जो टोटल लेंथ है वो कम है एज कम्पेयर टू दी रैम्प बी. तो बी में फ्रिक्शन का इफेक्ट ज्यादा होगा, उसकी वजह से बी पर ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, राइट. सो दिस हियर इज फॉल्स. This I believe should be enough from this topic. And okay, we have discussed conservation as well. We have discussed escape velocity. Okay, my bad. Make correction in direction. There has to be a 2 here, right? So इसकी वजह से यहाँ पर भी देख लें जो भी correction आती है and final answer देख लें. I hope this made sense. Till the next video. Allah Hafiz.